Hello friends and welcome back to Edureify YouTube channel. I hope you all are doing well. So today Edureify is here to tell you some quick and easy tips to prepare for your WBCS examinations. As we all know that West Bengal Civil Services examination is round the corner, and we all the aspirants must be doing some preparation and revision regarding this exam. So as we all know that revision should always be supplemented with a mock test. So Edurify is providing you that solution. So जिन्होंने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ डू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड हिट ऑन दी बेल आइकॉन सो दैट आप जो भी हम अपने वीडियोस बना रहे हैं WBCS एग्जामिनेशन से रिलेटेड उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप ईजिली एक्सेस कर सके. सो आई वॉज टॉकिंग अबाउट WBCS एग्जामिनेशन. सो आप हमारी वेबसाइट देख रहे हैं edurify.com जो कि हमारी स्क्रीन पे ऑलरेडी ओपन हो रखी है एंड वी आर गोइंग टू WBCS एग्जामिनेशन. हेयर इट इज. सो जो भी हमारा वीडियो देख रहे हैं वो साथ साथ इसको ओपन करके भी देख सकते हैं. सो एज यू कैन सी at present Edurify is providing you offer on their subscription passes. So we have three pass over here: monthly, yearly, and quarterly. So earlier it was of 599, now it's for 149. So this is a limited period offer. So please avail this. So यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको कस्टम टेस्ट प्रोवाइडेड है, फुल मॉक टेस्ट प्रोवाइडेड है, and there are unlimited number of questions to do revision with. सो जिन्होंने भी अभी तक हमारी एड्यूरीफाई वेबसाइट नहीं देखी, प्लीज़ अपने अपने लैपटॉप्स पे अभी edurify.com टाइप करिए और एड्यूरीफाई वेबसाइट पर आइए, मॉक टेस्ट दीजिए, अपना रिवीजन करिए. एंड ऑल्सो आप हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से. टाइप एड्यूरीफाई, डाउनलोड आवर ऐप, इंस्टॉल ऑन योर मोबाइल फोन्स एंड यूज़ फॉर द एग्जामिनेशन. सो हम आपको ब्रीफ दे देते हैं थोड़ा सा कि जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास है लर्न, प्रैक्टिस, ऑनलाइन टेस्ट. सो हम देखते हैं लर्न फीचर का यूज़ करके हम किस तरीके से अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं. सो सिंपली while क्लिपिंग ऑन द लर्न टैब, you have to select the exam, choose it from here, then choose the subject and select the subject. So I have chosen the exam and subject, and now I am signing with Gmail ID, or you can also sign it with your Google account, whichever is comfortable to you. So now you can see it. I have selected my subject maths, and we have arithmetic mean, geometric mean, harmonic mean, lines, properties of lines, angle, and many more. So just let me cross it and just see what are averages. So an average is a single value that is in some way indicative of a group of values. The most commonly used average is the arithmetic mean or simply the average. The other measures use the geometric mean and harmonic mean. So to move on to the next, we have to click on next tab and next topic will come. And meanwhile, अगर इसको रिवीजन करते समय you have to make some notes, just click on the notepad tab and here notepad will come, write it down and get it saved. सो इस तरीके से आप रिवीजन कर सकते हैं, आप अपना लर्निंग पेस भी चेक कर सकते हैं. सो दिस इज योर प्रोग्रेस and this is the expected progress. You have to fill the gap between this progress. You can check the time. So currently you have invested 1 minute 30 second times in this chapter, and there are total 25 topics. You were in second topic. So अगर आप मैथ्स का ये चैप्टर कंप्लीट कर रहे हैं, so you are completing for your JEE exam, CBSE and other government exams as well. So I hope this information was useful to you.
सो एड्यूरिफाई करो, पढ़ाई करो। थैंक यू।